चोक्सी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेन चोक्सी। देवेन, गुड आफ्टरनून। मार्केट में एकदम से आउट ऑफ सिलेबस ये इजराइल हमास वॉर और इसका एक इम्पैक्ट क्रूड प्राइसेस पर और हमारी मार्केट्स पर, किस तरीके से नेविगेट करें स्पेस को? गुड आफ्टरनून अनुज। जहां तक हमारा समझना है कि क्रूड ऑयल के जो दाम है उसके अंदर बहुत ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। इसका एक वन ऑफ द रीजन इज इवन इफ सम अमाउंट ऑफ डिस्ट्रप्शन टेक्स प्लेस ड्यू टू द Iranian crude. Iranian crude as such I think is available at a discounted rate in the marketplace. तो उसके हिसाब से देखा जाएगा तो शायद यहाँ पे इतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया एंड अदर UAE countries are not participating into this attack of Hamas on the Israel. So to a greater extent I think that situation is remaining quite normal. On other side, I think crude oil का जो दाम है, because of the equation that Russia should not get favor out of I think rise in the crude oil prices, I think the US and the other allies are definitely I think making sure that the crude oil के दाम नहीं बढ़े। Yeah, तो मेरा ऐसा मानना है कि I think maximum impact of this particular situation would be adversely if at all होता है affect तो भी I think करीबन 10 या 12% के आसपास होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। Given that understanding about the behavior of the likely behavior of the crude oil prices, मैं ऐसा समझता हूँ कि मार्केट के अंदर काफी हद तक ये चीज डिस्काउंट होती जा रही है और इफ एट ऑल आई थिंक वी आर राइट, प्रोबेबली मार्केट इज स्टेबिलाइजिंग एट करंट लेवल्स। मे बी इन दिस फॉल मैं ऐसा समझ रहा हूँ कि आई थिंक देयर वुड बी सम कॉन्ट्रा बाइंग टेकिंग प्लेस इन द मार्केट और करीबन 19,500 19,250 के आसपास का जो एक सपोर्ट लेवल है मार्केट का निफ्टी में, तो सपोर्ट के आसपास मेरे ख्याल से लार्ज कैप स्टॉक्स के अंदर बाइंग होनी जरूरी बनती है। शायद हम लोग ये देख भी रहे हैं। तो दिस इज वेयर आई थिंक वी बिलीव दैट आई थिंक वन शुड नॉट बी अनड्यूली गेटिंग स्ट्रेच ऑन दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। Uncertainties are many, but at the same time we believe that India market and the fundamentals remain absolutely convincing, as a result of which मेरा ऐसा मानना है कि I think lower level के ऊपर बाइंग आ सकता है, and that is what I think we are looking at for investing in our portfolios. तो देवन भाई, फिर आप इन्वेस्ट इस समय कहाँ कर रहे हैं? आईटी फॉर एग्जांपल, क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के मौके ढूंढ रहे हैं आप अर्निंग से पहले? सो बीटन डाउन स्टॉक्स के ऊपर ज्यादा फोकस है अनुज ये समय के अंदर। बैंकिंग क्षेत्र के अंदर करीबन नतीजे अच्छी तरह से आने की एक संभावना है, ये क्वार्टर में भी और ये सेकंड हाफ में भी। आई थिंक सम ऑफ द बैंकिंग स्टॉक्स हैव करेक्टेड ऑन द प्राइसिंग फ्रंट। डाउनसाइड रिस्क इज आई थिंक रिमेनिंग लिमिटेड। Larger companies like Reliance have corrected on the pricing front. Downside remains limited. Some of the mid-cap IT companies जहाँ पे engineering and R&D related business का कारोबार है, उनके अंदर ज्यादातर growth rate अच्छा बना है। तो I think any price correction due to this negative sentiment is becoming a buy opportunity. And similarly, I think some of the companies which are there in auto and auto ancillary space, कि जहाँ price के अंदर some of the auto ancillary companies particularly look interesting. So we are very selectively buying into the stocks which are relatively remain at a comfortable valuation and not on stretch valuation. अच्छा देवेन जी, आज इस पशुपेश इस क्रूड की तेजी और जियोपॉलिटिकल टेंशंस के बीच में आईटी का मैसेज बहुत स्ट्रांग है। निफ्टी आईटी स्ट्रांग भी है, स्टेबल भी है, हायर लेवल्स पे परसिस्ट भी कर रहा है। अब मात्र 4 दिन के अंतराल के बाद हम इनके नंबर्स पर रिएक्शन देना शुरू करेंगे। ये मैसेज क्या है निफ्टी आईटी का? क्या लॉन्ग जाना चाहिए निफ्टी आईटी पे एज अ ट्रेडर या फिर पोजिशनल ट्रेडर? आपका व्यू इस वक्त आईटी पे और आपके कन्विक्शन लिस्ट में क्या है इस वक्त आईटी में, मिड कैप आईटी, लार्ज कैप आईटी में? तो वीरेंद्र, आई थिंक मेरे कन्विक्शन लिस्ट के अंदर LTTS, L&T माइंडट्री, टाटा एलेक्सी, साइन टेक्नोलॉजी जैसी कंपनीज हम लोग मिड टियर आईटी कंपनीज के अंदर we are finding opportunities to buy into the portfolio once again. We have been holding these stocks, so we have fairly large amount of comfort level and understanding on the subject. But as the market gives correction on the price, I think we look at this particular opportunity afresh and buy further into the portfolio and increase the weight. दूसरी तरफ देखें तो जो the larger IT companies है जो comparatively available at a valuation which is neglected valuation as I call it as, इनके अंदर Infosys looks I think reasonably strong player to us. They have been signing silently some of the larger contracts which are giving you the visibility of 5 years to 7 years to even 10 and 15 years now. They are larger contracts. At the same time, I think जो customers ने अभी तक contract release नहीं किए हैं
साइन नहीं किए, we are now signing those contracts because of the requirement for implementing the technology, particularly on the computing side. मैं ऐसा समझता हूँ कि आई थिंक इन्फोसिस जैसी कंपनी जो निग्लेक्टेड वैल्यूएशन के ऊपर रही है इस समय के अंदर, they can possibly give you opportunity to make money of 15-20% in the following part of the year. So that is where we are looking at selectively some of the IT companies. ओके तो कुछ सिलेक्टिव आईटी कंपनियों में आपका रुझान तेजी का है और इनफैक्ट एक बेहतर ट्रेड साबित होगा। देवेन, कुछ देर पहले यतिन बता रहे थे कि ये फेस्टिव सीजन का आगाज शायद मारुति कर रहा है कुछ डिस्काउंट्स देके। अब आपने मेंशन किया ऑटो एंसिलरीज आपको पसंद है, लेकिन ये सेल्स के पर्सपेक्टिव से अगर कुछ और डिस्काउंट्स आते हैं दूसरे प्लेयर्स की तरफ से, क्या यहाँ पर और तेजी की संभावना आएगी प्योर प्ले ओईएम मैन्युफैक्चरर्स में? तो प्योर प्ले ओईएम के अंदर देखें तो आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर प्राइस टू परफेक्शन एट करंट लेवल्स इन द वैल्यूएशन. Most of the positives are already priced in many of the companies' cases, be it two-wheeler major like Bajaj Auto or be it Maruti. I think the prices have increased. So unless we see a meaningful correction in the price, I think the upside opportunity may not be as good as I think it is available in some other areas of activity. I'm not saying they will not appreciate, but they may not be having a larger component for giving you the appreciation in 6 months if the price is remaining at an elevated level. तो उसकी जगह पे मैं समझता हूँ कि आई थिंक टू ए ग्रेटर एक्सटेंट लाइक्स ऑफ टाटा मोटर्स वुड रिमेन रिलेटिवली मोर फेवरेबल प्ले, क्योंकि एक तरीके से देखें तो आई थिंक दिस कंपनी ऑन कमर्शियल व्हीकल पोर्टफोलियो एज वेल एज ऑन पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो एंड ई पैसेंजर व्हीकल पोर्टफोलियो इज मूविंग सिस्टमेटिकली अहेड. टाटा टेक्नोलॉजीज का इश्यू भी अगले 6 महीने के अंदर प्लान हुआ है, so that also is going to drive the tailwind as far as I think the stock price growth is concerned. They look reasonably more stable company to me at this point of time. And some of the ancillary companies, they are looking better क्योंकि एक तरफ commodity के दाम कंट्रोल में है, दूसरी तरफ डिमांड सिनेरियो buoyant है, and I think they are growing at a reasonably good speed at a growth rate. So because of the OEM taking the higher amount of growth rate, these ancillary companies are actually having a piggyback ride, and they are also comfortably producing higher amount of performance. So likes of Minda, likes of Minda Corporation, they remain relatively more stable play at this point of time in buying to the portfolio. ओके अच्छा देवेन जी, अभी एमसीएक्स पर एक आइसोलेशन में से बात करना चाहूँगा, आपका व्यू क्या है? अब हर व्यक्ति जो इसमें निवेशित था या फिर जिसने ट्रेड किया वो इन द मनी है, प्रॉफिट्स में है, ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी पे है, नए प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट होने की सेबी से अप्रूवल फाइनली मिल भी गया है. आपका व्यू क्या है? और एक और चीज़ आई मीन बताओ, इक्विटी एक्सचेंज भी जब एनएससी बीएससी जब कमोडिटीज़ के डब्ल्यूटीआई के जो ऑप्शंस लॉन्च कर रहे हैं, इस बीच में आपका कोर व्यू एमसीएक्स पर है क्या? यहाँ भी ये प्रॉफिट बुक करने का अच्छा वक्त है, ये खबर, ये लेवल्स, या फिर अभी और अपसाइड बाकी है इस स्टॉक में? एमसीएक्स पर आपका व्यू? So overall, I think the opportunity will remain very high as far as exchange business is concerned, largely because of the fact that the entry barrier to this business is significantly high. Having said that part of it, new products introduction is the ultimate driver for growth in these businesses. As आपने सही बताया कि existing exchange के अंदर भी they are basically bringing in the new commodity contracts, and I think the current commodity player like MCX is also planning to bring in better contracts going forward. So to a greater extent, I think that should be driving the growth eventually. How much growth it can produce, etc., will probably take some time. Till the time I think we get the clarity. एक तरफ उनका जो नया प्लेटफॉर्म के ऊपर मूव होना और उसके साथ में उनकी जो कॉस्ट घटना, ये जो प्रक्रिया उसका जो मार्केट के अंदर रिफ्लेक्शन आ जाए स्टॉक प्राइस के अंदर, वो ऑलरेडी मेरे ख्याल से आ चुका है. तो वो चीज के ऊपर मैं ज्यादा अभी सिग्निफिकेंट वेट नहीं दूंगा. I'll be probably carefully looking at what is going to be the game plan of the exchange to bring out the new product and what innovation it can bring it up. So that is where I think some potential remains high. But थोड़ा भाव आज की तारीख में इतना सपोर्ट नहीं दे रहा है because I think the stock price has already moved up. Correction in the stock price may be eventually better. Maybe I think at this point of time one will wait on the sideline to wait and see how exactly other exchanges are reacting to different product introductions which are happening right now.
देवेन, आपकी इन एफएमसीजी प्लेस पर क्या राय रहेगी, कंज्यूमर प्लेस पर? आज देखिए टाटा कंज्यूमर इनफैक्ट ये हाई पर ट्रेड करता हुआ, जुबलेंट फूड की हम बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले उसमें तेजी बनती दिखाई दी है। यहाँ पर भी तो फेस्टिविटीज का प्ले आता हुआ दिखाई दे सकता है। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब की बारी वॉल्यूम्स में कुछ पिकअप देखने को मिले? In fact, I'm extremely convinced and bullish about I think this entire space क्योंकि इलेक्शन के पहले का समय है. Money is being spent in the rural economy and I think higher amount of consumption is leading to higher amount of volume growth and the price growth for some of the FMCG companies. Fortunately, लास्ट 6 महीने के अंदर आप देखें तो गवर्नमेंट ने जो सिस्टमेटिकली फूड प्राइस के ऊपर जो मैनेज किया इन्फ्लेशन का, तो मैं ऐसा समझता हूँ कि बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक देयर प्रॉफिट मार्जिन्स आर आल्सो रिमेनिंग इंटैक्ट. तो एक तरफ वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ के आना ऑन अ क्वार्टर ओवर क्वार्टर बेसिस, दूसरी तरफ प्राइस राइज नहीं होना, सो इनपुट कॉस्ट इज आई थिंक अंडर कंट्रोल. So likes of ITC, likes of Nestle, likes of Britannia, they remain relatively more stronger in this particular area of activity. And we believe कि यहाँ पे एक opportunity अच्छी बनती है. Maybe I think we will not see a runaway boom in these stocks, but if you are selectively invested into these companies and particularly buying when the market is giving an opportunity at lower levels, मेरा ऐसा मानना है कि करीबन 15% के आसपास का रिटर्न आप कहीं नहीं जाता है, आराम से आपको और साल के अंदर मिल सकता है इतना रिटर्न if you are buying at corrective prices in the market in a given part of the year. ऑलराइट, चलिए देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हम